हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्टिक हब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द परमानेंट मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर। सो दिस इज द मेनली द सेकेंड टूथ। दिस इज द second tooth in the mandibular, as we see from the medial line. First is the central incisor and second is the lateral incisor, and this is mainly it resembles so closely to the central incisor. So now in the mandibular lateral incisor is somewhat larger. Here we can see say that कि जो mandibular का central incisor होता है वो larger होता है in comparison to the mandibular lateral incisor जो mandibular lateral incisor होता है वो larger होता है than the central incisor. हाँ, एंड समवॉट वो ये भी बोल सकते हैं कि ये इस टूथ में जो है दो कैनाल्स होती हैं, एक सिंगल रूट में टू कैनाल्स, ऐसा कहा जाता है। मेनली ये कितना सही है कितना गलत ये नहीं अभी पता। नाउ व्हाट अबाउट द क्रोनोलॉजी? फर्स्ट एविडेंस ऑफ calcification is mainly at 3 to 4 months. Enamel is completed at 4 to 5 years. Eruption is completed at the teeth is erupted mainly at 7 to 8 years, and the root is completed at about 10 years. What about the dimensions? All the dimensions are in millimeters, जैसा कि मैं बाकी वीडियोस में भी बताती रहती हूँ। सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं तो सर्वाइको इंसाइजर लेंथ ऑफ क्राउन दैट इज कितनी है 9.5 mm, एंड रूट द लेंथ ऑफ द रूट इज 14 mm. Mesiodistal diameter of the crown, that is, this is the mesial side, this is the distal side. तो mesiodistal diameter of the crown वो कितना होगा 5.5 mm, and at the cervix that is 4.0 mm. What about the labiolingual or buccolingual diameter of the crown? Is about 6 to 5 mm, and labio or buccolingual diameter of the crown at the cervix that is about 5.8 mm. The curvature of the cervical line at the mesial side is 3.0 mm, and at the distal side that is a 2.0 mm. Now let's talk about the labial and the lingual aspect. So ऐसा कहा जाता है कि जो labial and lingual aspects हैं they show the added fraction approximately of 1 mm इन द डिस्टल साइड. अगर ये मीजियल और डिस्टल साइड है इसका, तो ये इसका जो है ये डिस्टल और मीजियल साइड हो गया. ओके नाउ तो ऐसा बोला जाता है कि लेबियल एंड द लिंगुअल एस्पेक्ट शोज द एडेड फ्रैक्शन ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 1 mm एट द डिस्टल साइड. मीजियो डिस्टली इसमें ऐड होता है, बट डिस्टल साइड पे क्या होता है, ये जो 1 mm है वो एडेड फ्रैक्शन होता है to the distal half. And the lingual aspect of the mandibular incisors in some mangoloid groups is marked mainly by the deep and the short cervico-incisal grooves. मैंगोलॉइड ग्रूव्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक सर्वाइको इंसाइजल की एक ग्रूव प्रेजेंट होता है दैट इज मोर प्रोन टू कैरीज, वनरेबल टू कैरीज विच इज. नाउ what about the mesial and distal aspect? Mesial side of the crown अगर हम देखेंगे तो वो longer है in comparison to the distal side. Mesial side की बात हो रही है या mesial slope की बात हो रही है या फिर mesial grooves की बात हो रही है, mesial fossa की बात हो रही है, इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे मैं mesial side की बात कर रही हूँ, अक्सर हमें confusion हो जाती है mesial side, तो ध्यान दीजिए. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ mesial side of the crown is longer than the distal side. Don't be confused. Now, what about the mesial aspect? Crown is wedge-shaped or a triangular. The base of the triangle is at the cervix and its apex at the incisal ridge. The line drawn through the crown and root from the mesial aspect. अगर mesial aspect से हम देखें तो जो line हमने draw की है tooth को bisect करने के लिए, at the apex of the root and the incisal ridge of the crown.
नाउ व्हाट अबाउट द डिस्टल एस्पेक्ट? डिस्टल सरफेस इज स्मॉलर, जैसा कि मैंने अभी बताया, एंड दे आर मोर कॉन्वेक्स इन ऑल द डायमेंशंस देन द मीजियल सर्फेसेस, एंड द कर्वेचर ऑफ द सर्वाइकल लाइन इज यूजुअली अ मिलीमीटर और लेस इन डेप्थ देन ऑन मीजियल साइड. जैसे कि मैंने बताया मीजियल साइड पे कितनी होती है, 3 mm होती है, और मीजियल साइड पे कितनी होती है, 3 mm होती है, और डिस्टल साइड पे कितनी होगी, इट्स अबाउट 2 mm. और जो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, प्रोक्सिमल कॉन्टैक्ट, इट्स मेनली एट द इंसाइजर and the middle third. Now what about the incisal aspect? Incisal aspect mainly resembles to the central incisor. This is a ovoid in shape. Cingulum इसका क्या है, it may be largest as in the incisal ridge. Labiolingual dimensions अगर हम देखेंगे, the labiolingual dimensions is greater. Labiolingual dimension is greater than mesiodistal dimension. Now, how we can differentiate between the left and the right lateral incisors? So, first we see the curvature of cervical line. कि mesial side में कितनी है, 3 mm, distal side में कितनी है, 2 mm. Mesial side जो है crown का क्या है, greater है than the distal side of the crown. These are the mainly two features through which we can differentiate between the lingual side and the right lateral incisor and the left lateral incisor.